Good morning, students. We will continue the journey that we had begun, and because it's a long walk, the chapter is going to take a long time to complete. We had left the last class at this place, and we'll begin from here. The little paragraph that we're going to read today, I'm going to ensure that you fully, completely understand this. So here we go. On the day of the inauguration, if you have forgotten the meaning, when something is used for the first time, like a shop is inaugurated, it is new and it is inaugurated for the first time, customers come in and then make their purchases. Inauguration. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Nelson Mandela is saying, the day my government was inaugurated, the day my presidency was inaugurated, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed means to be deeply affected, a highly emotional state. So like, suppose you become one of you becomes the Orissa topper in CBSE class 10 examination. That sense is, the sense that you are going to get is overwhelming. So happy that you are not able to decide what to do. And the overwhelming feeling can also be sad. Somebody can be too sad. That is also overwhelming. It's an overwhelming sense of loss. So the meaning is a deeply emotional state because of something that has happened. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Nelson Mandela says that a few years before his own birth, the different white-skinned people of South Africa, they patched up their differences. उनके अंदर में जो भी मतभेद थे, जो वाइट लोगों के बीच में जो मतभेद थे, वाइट लोग अलग अलग वाइट लोग भी हो सकते हैं. हियर इन साउथ अफ्रीका पर्टिकुलरली ही इज टॉकिंग अबाउट वाइट पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, वाइट पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स. सो दे हैड देयर डिफरेंसेस, उनके बीच में मतभेद थे. लेकिन नेल्सन मंडेला के पैदा होने के कुछ साल पहले अपने अंदर के जो भी मतभेद थे, वॉट एवर डिफरेंसेस दे हैड बिटवीन देमसेल्व्स, दे पैच्ड इट अप. पैच्ड इट अप मीन्स वो सब डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए डिस्कशन से कि ओके ये प्रॉब्लम है, लेट्स एंड दिस प्रॉब्लम्स एंड दिस डिफरेंसेस बिटवीन अस. पैच्ड अप, जैसे कि कोई चीज़ को सिलाई करके पैच कर दिया जाता है, दैट इज पैच्ड अप. एंड व्हाट डिड दे डू आफ्टर पैचिंग अप द डिफरेंसेस? Erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. Erected, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया. Erected means खड़ा कर देना. Erected a system of racial domination. एक जाति का दूसरे जाति के ऊपर डोमिनेशन, पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाना, that is called domination. So here which two races we are talking about? The black race and the white race. They erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. एक ऐसा सिस्टम बनाए रेशियल डोमिनेशन का, जैसे कि एक रेस दूसरा रेस के ऊपर हर समय स्ट्रॉन्ग रहेगा. द स्ट्रक्चर जो सिस्टम जो बनाए हैं, स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड. Structure actually means a building, but here
here Mandela is saying structure means the structure of apartheid. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो सिस्टम बनाए वो सिस्टम एक ऐसा सोसाइटी को जन्म दिया, एक ऐसा सोसाइटी उससे फिर बना जो एक हार्सेस्ट था, सबसे हार्सेस्ट, सबसे रफ, सबसे एक्सप्लॉइटिव, सबसे अत्याचार करने वाला, मोस्ट इनह्यूमन. एनीथिंग दैट इज इनह्यूमन इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. जैसे कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा मार रहा है, is beating somebody, somebody is beating somebody else ruthlessly, बिना कोई दया का, that is called inhuman. Human का opposite inhuman, sorry the pronunciation, inhumane. एक ऐसा सोसाइटी बनाया जो inhuman था, harshest था. And now in the last decade of the 20th century का last decade and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever. How much time it took for that system to be overturned? वो system को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगा देखो. Nelson Mandela is himself in the 8th decade. एक डेकेड होता है 10 साल, तो 8वां डेकेड में अगर है, if he is in the 8th decade, it means he is in his 80s. His age is 80 plus. Overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. वो सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया जिस सिस्टम में एक रेस दूसरे रेस के ऊपर हर समय डोमिनेट करता था, हर समय उसके ऊपर हावी होता था. एंड दैट सिस्टम हैज़ बीन एंडेड. नाउ द सिस्टम विच इज़ देयर, in this system the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अभी जो सिस्टम बना है, जो सिस्टम का इनॉग्रेशन हुआ है, बेसिकली नया सरकार का इनॉग्रेशन, इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, सबको इक्वल राइट्स है, इक्वल फ्रीडम है, उनका कलर, स्किन का कलर चाहे जो भी हो. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये दिन आया because of the sacrifices जो बलिदान दिए हैं लोग, unimaginable, जिसे सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसा बलिदान लोग दिए हैं. ऐसा देने के बाद ही ये दिन आया है. Thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. जितना दर्द वो सहे हैं और जितना हिम्मत वो दिखाए हैं, उसे काउंट नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी रीपेड. उसे फिर से उनको उसका रीपेमेंट नहीं हो सकता. दैट इज़ देयर सेक्रीफाइसेस, देयर सफरिंग, देयर करेज इज that they had shown, who had shown the black people who were suffering, जो सफ़र कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, उनका सफरिंग, उनका सेक्रीफाइसेस, उनका करेज कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, कभी भी रिपे नहीं किया जा सकता. देयर इज़ नो मॉनेटरी वैल्यू टू रिपे वट एवर दे हैव डन और वट एवर दे हैव एंड्योर्ड, द पेन दैट यू हैव एंड्योर्ड. आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. ये उन लोगों के बारे में याद कर रहे हैं जो कि पेट्रियट्स थे, देशभक्त थे, और ये कह रहे हैं कि मैं उन सभी 10 देशभक्तों का एक कॉम्बिनेशन हूँ.
उनका कुछ कुछ अंश मेरे अंदर है. I am the sum of all those African patriots. Together, whatever they have fought for, whatever they have endured, उन सब का जो sacrifices है, courage है, उन सब का मेरे अंदर कुछ ना कुछ है. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. उनका टाइम ख़त्म हो गया है. अब मैं ये प्रेसिडेंसी शुरू कर रहा हूँ. He says, I was pained. मेरे को ये दर्द हुआ कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया. और इस चीज़ का भी दर्द है कि वो जो किए हैं उसका रिज़ल्ट आज जो आया है वो देख नहीं पा रहे. They are not able to see the result. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. That apartheid, the system of apartheid, created a deep and lasting wound. It created an injury in my country and my people. मेरे देश के लोगों को पूरी तरह से वो घायल कर दिया उस सिस्टम. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. उस हर्ट से, उस इंजरी से, वो उस घाव से निकलने के लिए हमको बहुत साल लग जाएंगे. अगर इवन इफ यू वो जनरेशन्स नहीं लगे, जन्म नहीं लगे, फिर भी बहुत साल लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthalis, the Yusuf Dedos, the Bram Fissers, the Robert Sobukways of our time. He says that उसका एक जो इतना सफरिंग हमको मिला, उसका एक अनइंटेंडेड एक फ़ायदा मिला उस चीज़ से हमको. And what is that benefit? The benefit is that because of those harsh conditions, these extraordinary people were born. These extraordinary personalities came to public life. जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है उतना टफ लोग आते हैं. सो ही सेज दैट बिकॉज ऑफ दोज टफ टाइम्स these tough people came to help Africa to fight for the Africans. Men of such extraordinary means exemplary, जो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, those people are extraordinary. So if suppose somebody scores a 200 score in a 2020 match, that is extraordinary. Scoring 100 is excellent, but scoring a 200 score, having a 200 score is extraordinary. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे लोग जो आए थे वैसे लोग शायद और कभी न आए. And is it not true about our own freedom struggle? The kind of people who came during our freedom struggle, the kind of character they had, the kind of courage they had, such people may not come again to our society, because those were tough times and tough people were born. There is a saying, when the going gets tough,
when the going gets tough, the tough get going. जब परिस्थिति बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वैसे ही लोग, वैसे ही टफ लोग पैदा होते हैं, वैसे ही टफ लोग अपना काम करना शुरू करते हैं. When the going gets tough, the tough get going. जो टफ होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं सिचुएशन टफ होते ही. So we'll stop here, and what you have to do, whatever we have read today, that you have to write down. Simply you have to write down. बस लिखना है तुमको. Whatever we have read, and again see you in the next class. Till then, bye. Have a good day.